All right. So, hi everyone. A very good evening to all of you, and welcome to another session of Ask Me Anything. Please give me a thumbs up if you guys can see me properly and can hear me properly. Please give me a thumbs up if you guys can see me properly and can hear me properly. जल्दी से बताओ भाई. Good evening, Amang. Can you hear me? All right. Let's start asking. Now, please start asking your queries and. Yeah, so this is Ask Me Anything session where you can ask me anything with respect to RBI, SEBI, and NABARD examination. Any query you have, anything that you would like to ask from these examinations. ठीक है. चलिए पहला क्वेश्चन आया है आयुष गुप्ता का. सर मैं सेकंड सेमेस्टर में हूँ. हाउ आई प्रिपेयर फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. आयुष गुप्ता, आई वुड सजेस्ट यू टू एक्सप्लोर मोर. राइट, इफ यू हैव फाइनली डिसाइडेड to go for the RBI Grade B examination, I would suggest you to go for the static part. Although you are in second semester, I believe you have a lot of time. So अभी तो मैं आपको ये बोलूंगा कि थोड़ा सा आराम से चिल करो और एक्सप्लोर करो that what all you can do with your life. उसके बाद जब आप फाइनल ईयर में आ जाओगे then I believe you should start preparing because इतना ज्यादा सिलेबस नहीं है कि आपको 2 साल लग जाए या 1.5 साल लग जाए कंप्लीट करने में. 6 to 8 months are more than enough. So even if you are in the final, if you start your preparation in the final year, then also it is more than enough. So 1 year would be more than enough, my dear friend. All right. Anybody else who wants to ask me anything? And a lot of people are asking this question regarding the RBI Grade B notification when it's going to be released. So let me tell you guys, nobody can guarantee you the date, and nobody can guarantee you even the expected date of the notification because nobody knows right now. They haven't provided the joining of 2024 also. So before completing last year's process, they cannot release the notification. So अगर हम उसके हिसाब से समझेंगे तो थोड़ा बहुत मतलब अगर आप मेरे से पूछोगे मेरी समझ के हिसाब से, if as per my understanding the notification will release in the month of June or July. ठीक है, but again that is not something which I can guarantee. It may be released in the month of April, May, or maybe it gets extended to July, August, or maybe September. So actually there is no particular पैटर्न विच इज बीइंग फॉलोड. एक छोटा सा पैटर्न है, उस पैटर्न के बेसिस पे अगर मैं समझना चाहूँ देन द नोटिफिकेशन विल बी आउट इन द मंथ ऑफ जून. राइट. डिस्क्रिप्टिव में अच्छा स्कोर कैसे करेंगे? सो अमन, डिस्क्रिप्टिव के लिए तो आई हैव ओनली वन एडवाइस एंड दैट इज एक्चुअली नॉट वन एडवाइस, बहुत सारी एडवाइसेस हैं. सो वैसे तो आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन सेपरेटली ऑन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, बट डिस्क्रिप्टिव में अगर आप मेरे से समझोगे तो कुछ 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू write your answer in a particular format, that is intro, body, and conclusion. Right. There should not be any grammatical errors. You should use simple to understand words. You are not Shakespeare, and even the examiner who is checking the answer is not the Shakespeare. You don't have to use fancy vocabulary. Right. You have to use keywords. Right. If you are writing an answer on communication, right, so you should give some examples of some theories of communication. For example, leadership का अगर आंसर लिख रहे हैं, so you should give some examples, some case studies of leadership. Right. Keywords हो गया. इसके अलावा जो आपका वर्ड लिमिट है उसको ध्यान में रखना है. So these are the 4-5 things that you have to remember while writing an answer. And answer writing is not a one-day game or 1 week game or even a
month game. It is a game of practice, only practice. The more you practice, the better your answers will be. ठीक है अमन? How to decide up to what depth any topic need to be covered if you are reading any topic for phase 2. That's why the mentors are required, Sejal. So yeah, even if you are not enrolled in any course, you can also do this thing yourself. Let me tell you how. For example, you are studying a particular topic. Let's say again, you are studying communication from management. Now on communication, you can even do PhD, right? But here we are not no you know we are not here to do PhD in any particular topic. So what you have to do, first of all, see, मैं हमेशा बताता हूँ, जब भी आप किसी एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करते हैं, so two things are the most important for you, and that is syllabus and PYPs. So you have to go through the PYPs, and not just only go through the PYPs, you have to just आप उसको घोल के पीना है आपको. PYPs ऐसा है होना चाहिए आपका कि आपको अगर कम्युनिकेशन का चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन आया था लास्ट पिछले 3-4 सालों में, राइट? तो वंस यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग of the PYPs, then you can easily identify that, okay, this is the depth up to which I have to go while studying any particular topic. Again, if I talk about fiscal policy, on fiscal policy you can read entire book, ठीक है, but एक chapter से भी काम चल सकता है. So again, you have to identify it through the PYPs, right? I hope Sejal, your doubt is clear. आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 के लिए करंट अफेयर्स जैन से स्टार्ट करें या 2024 अक्टूबर दिसंबर से, एंड व्हाट अबाउट रिपोर्ट्स? नहीं, अक्टूबर दिसंबर से नहीं जानने की जरूरत है. यू कैन स्टार्ट करंट अफेयर्स फॉर दिस ईयर्स एग्जामिनेशन फ्रॉम जनवरी. ठीक है, जनवरी 2025 इज गुड टू गो, एंड ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑल्सो यू हैव टू कवर फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी. ठीक है, बट यस, देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स व्हिच आर रिलीज्ड बाय एनुअली, 2 साल में एक बार आती हैं. तो इन दैट केस, फॉर एग्जांपल, कोई भी XYZ अगर रिपोर्ट है, तो जो भी उसका लेटेस्ट वर्जन है वो आपको पढ़ना है. अब चाहे वो लेटेस्ट वर्जन 3 साल पहले रिलीज हुआ हो. ऐसा हुआ था इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के साथ, लास्ट टाइम 2021 में रिलीज हुई थी. तो 2024 तक जो है ISFR के 2021 वाले रिपोर्ट से क्वेश्चन आए हैं, राइट? बट नाउ दे हैव लॉन्च्ड द रीसेंट रिपोर्ट ISFR India State of Forest Report 2023. So now they will ask question from 2023 report. I hope, Mansi, your doubt is clear. NABARD ESI के लिए strategy for both phase 1 and phase 2. Satrup Datta, I think for NABARD, if I talk about the phase 1, so only PIB sessions would be good to go, because I have been watching it for the last 3 years. Out of 40 questions, they are asking 35 to 36 questions from PIB sessions, and my sessions which I am taking for PIB are more than enough. In fact, लास्ट 2 years में तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी देखे हैं. 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि एग्जैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैंने पेपर बनाया है, राइट? सो फॉर दैट PIB, एंड अगर मैं फेज 2 की बात करूं, सो PIB, गवर्नमेंट स्कीम्स, एंड ऑफ कोर्स द स्टैटिक पार्ट. ठीक है, क्वांट बहुत टफ है, कहाँ से प्रैक्टिस करें? कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा मेरा. अरे कैसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, आप बस प्रैक्टिस करिए. कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ. जो SBI PO मेंस लेवल के क्वेश्चन है आपको वो करने हैं. अगर आप मेरे से बुक्स पूछेंगे तो आप कैट की बुक फॉलो कर सकते हैं, रोहित, जैसे कि सर्वेश वर्मा है और अरुण शर्मा है. ठीक है, एनी चांस ऑफ सेबी दिस ईयर? आई डोंट नो. अंशुल सर, सपोज मैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन को ज्यादा अटेम्प्ट करूं, डिस्क्रिप्टिव को कम अटेम्प्ट करूं, तो क्या सर वो सही अप्रोच रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं. ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते. मैंने ऐसे थोड़ी, भाई 50-50 है दोनों. 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, और 4 तो क्वेश्चन, लेकिन उसमें छोड़ोगे क्या? भाई 4 क्वेश्चन में भी क्या छोड़ के आओगे? नंबर नहीं आते. RBI का जो एग्जाम है भाई, बहुत खतरनाक एग्जाम है. PIB monthly compilation, Rishabh, is provided in the course. NABARD Grade A 2024 कट ऑफ, अब देखो उनकी मर्जी है, जब निकाले. अब तक में तो आ जाना चाहिए था, बट ठीक है, इस बार सब कुछ ही लेट हो रहा है, तो NABARD का भी लेट होगा. How to practice or test our knowledge of static part? You have to solve the practice questions from wherever you are preparing. So if you are preparing yourself, you have to prepare questions, ठीक है, and then practice it. और नहीं हो रहा है तो आप वेबसाइट्स पे जाइए, आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस. प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा दैट यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट. क्वांट के लिए मेरा क्या कहना है?
मेरा कहना यही है कि आपको बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शिवम. देयर इज ओनली वन वे आउट एंड दैट इज टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड नॉट ओनली प्रैक्टिस दी स्मार्ट वर्क एज वेल. क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि क्वांट में देयर इज it is impossible that you can solve all the 30 questions. Not at all possible, right? So what you have to do is you have to identify that okay, these are the areas which I am going to touch in the actual examination, and that's only going to happen if you are attempting more number of mock test. आप mock test समझ में आएगा आपको, and with your preparation आपको समझ में आएगा that okay, these are the areas which I am comfortable with. For example, you are comfortable with time, speed and distance. देखो कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं. कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, क्वांट कह रहा हूँ, डीआई से क्वेश्चन आता ही आता है. तो अगर आप ये कुछ 6-7 एरियाज भी कर लोगे तो आपके 10-12 क्वेश्चंस हो जाएंगे. ठीक है. So I think that is all I have to say about quants. Shubham, could you please provide a list of number of reports? Yes, I will be doing that, but give me some time. Please have such session every week. What session? कौन से आप एक आस्क मी एनीथिंग की बात कर रहे हैं? सो आई विल बी टेकिंग दी आस्क मी एनीथिंग सेशंस एवरी फोर्टनाइट. सर क्वांट्स में कितने अटेम्प्ट करने होंगे तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि सर 2024 में कट ऑफ. तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ 2024 एग्जामिनेशन एंड the number of vacancies as well, so I would suggest you to target 12 questions in quant. ठीक है. 12 क्वेश्चन तो आपको क्वांट करने पड़ेंगे, बट अगेन ये ध्यान रखना कि कहीं एग्जाम में अगर इजी आ गया और आप अपने दिमाग में 12 ही लेके चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है. अगर एग्जाम में इजी आ गया तो भाई पूरे पूरे 30 करके आओ ना. यस अंशुल, दैट इज गुड इनफ. आई कांट टेक द नेम बट दैट इज गुड इनफ. बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बट trust me, that is good enough, whatever you are asking. I'm in fourth semester of my graduation, so as someone who has no idea of subjects in RBI exam, how should I start preparing for it? So first, Sambhavi Dwivedi, first you should gather the idea about the examination through the syllabus, through the pre-YPs, and then you have to understand that whether you can crack this examination or not. Because देखो, everybody knows their own potential. जैसे मेरे को पता था कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता. So I was आई वॉज प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि मेरे को यूपीएससी का पेपर तो नहीं देना, बट हाँ मैंने तैयारी जरूर करी थी जस्ट टू गैदर द नॉलेज, क्योंकि भाई उसमें हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलती है, ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिलती है, पॉलिटी भी पढ़ने को मिलती है, तो मजा आता है पढ़ने में. बट मुझे पता था एग्जाम तो नहीं निकलेगा मेरे से, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल है. ठीक है. तो सिमिलरली संभवी यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट ओके, दिस इज द सिलेबस, दिस इज द एग्जाम पैटर्न, दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चन which you have to identify through the PYPs. Only then you should have you should have an idea. ठीक है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस कुएं में आप कूदने जा रहे हो उसकी गहराई आपको पता होनी चाहिए. So that it is a कुआं and आप you should know the depth. ठीक है. So basically first you have to understand the syllabus, the PYPs, and then you have to identify it whether you are ready for it or not. If you are ready, then again connect me on Telegram, Mashy Manish, MASHY, we'll discuss your strategy. I'm taking 45 minutes to write a 600-word answer. I'm feeling demotivated at the time. Is it possible to improve my speed, and how can I improve? Jeevan Kotagiri, I have made a video on typing speed. Please watch that video. Uh, it will be helpful for you. Okay? And don't worry, if you are taking 45 minutes to write a 600-word answer, it will gradually reduce to 30 minutes. Don't worry, but just keep on practicing. Just keep on practicing. Sir, minimum hours for working aspirant if he starts prep now, and what are the chances to crack this year? Of course, there are high chances that you can crack this year because the notification is yet not out. In fact, there is no even rumors of the notifications yet. So, love, I believe you can easily crack this examination in the given amount of time. Regarding number of study hours, so that depends on your potential. I can do particular PDF, let's say in 3 days. You can do it in 1 day, so you will take 1/3 less time than me. Okay, 2/3 in fact less time than me. So that depends on your potential. You need to create a timetable for yourself, the feasible timetable, and then you'll understand it. Okay.
Sumit Tiwari, keep on revising, don't worry, keep on revising and keep on practicing the question. You will be able to remember it. Where are we do mock practice? Where can we do mock practice? So there are a number of platform. टेक्स्टबुक पे भी आओ, वहां पे भी बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट पड़े हैं, आप वहां से अटेंड करिए. Yes, Soumya, why not? You have a lot of time as of now, but yes, अभी से ही करो. अब ये नहीं कि अब यही सब करते करते नोटिफिकेशन आया एंड देन आप फिर मेरे से सेम सवाल पूछ रहे हो कि कैन आई क्रैक इट और नॉट. तो उस समय मेरा जवाब होगा ना. राइट नाउ यू कैन डू इट. Today you gave say SBI PO. I'm not sure of prelims result, but will continue mains preparation in case I fail in SBI. Want to attempt RBI Grade B. Okay, Sambhavi, you should be going for RBI Grade B. RBI Grade B exam may be conducted in the month of July or August. Sambhavi. सर मेरा ये डाउट है कि अगर मैं डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, क्योंकि उसमें बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से क्या करना चाहिए? पहले बेसिक्स क्लियर, ऑफ कोर्स पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के, फिर आपको एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और ऐसे नहीं, आपको पहले एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा संभवी, एंड स्टिक टू दैट टाइम टेबल एंड देन यू शुड मूव फॉरवर्ड. शुड आई कवर फाइनेंस करंट अफेयर्स फॉर NABARD ग्रेड ए? यस जीवन, मैंने आपने क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैंने बताया था. यस, आपको बेसिक लेवल का फाइनेंस करंट अफेयर्स करना है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है. जो आपकी जनरल करंट अफेयर्स मैगजीन है, जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, the banking and economy part of that, and the basic, the very most, the most important reports of RBI. That's it. Please give us one platform where we can find RBI notification reports and schemes. ये सब कुछ विद्यासागर you can get in a course. आप कोई भी कोर्स लेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा. No idea about vacancies, Soumya. How can I have an idea about the vacancy? सर मैं 6 कैटेगरी का स्टूडेंट हूँ और HDFC AM वर्किंग हुई. ये 6 कैटेगरी का स्टूडेंट क्या होता है भाई? I don't understand, Saurabh. Please, can you elaborate? Is finance current affairs same as the general banking GA current affairs? No, bro. It is absolutely different from finance. The finance current affairs is absolutely different from general banking GA current affairs. It includes RBI notifications, RBI press releases, and all the finance current affairs related news from the world. Self-study is best or any course to be purchased? Sarmira, that depends on your potential. My dear friend, a lot of people clear this examination through self-study, but a lot of people require the course as well. अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है, तो मुझे नहीं पता कि वो कितना सही होगा. अगर मैं आपसे बोलूंगा कि हाँ कोर्स खरीदना चाहिए, तो आप बोलोगे कि कोर्स बेच रहा है ये तो. सो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मीरा. You are a well-grown adult. You need to identify whether you need a course or you can do it through the self-study. बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि लोग करते हैं, खुद से भी करते हैं. अमन, आपको पूरा मार्च का महीना प्री के रिवीजन में क्यों लग रहा है भाई? साथ में मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया है कि फेज 1 और फेज 2 की तैयारी आपको साथ में करनी है. आप फेज 2 का सिलेबस स्टार्ट करो और साथ में फेज 1 की रिवीजन करो. फेज 2 अप्रैल से स्टार्ट करोगे बहुत लेट हो जाएगा. Akash, I believe Akash is asking that he is facing problems in structuring the answers, and usually end up taking 30 to 45 minutes for a single answer. That's perfectly fine, Akash, as of now, because if we assume that the examination will take place in the month of June, so tab tak I believe you will be able to manage the typing speed and you will be able to structure your answers as well. You are going good. Don't unnecessarily uh, don't unnecessarily अपने आप को anxious feel मत कराओ. You are going good. Sir, that's my last year graduation and I'm preparing RBI Grade B exam. Can I able to do? हाँ, why not? Why not, Prachi? Why not? I'm here. Other faculties are there. पूरा दुनिया भर का कंटेंट पड़ा है आपके पास, आप क्यों नहीं करेंगे? It's just that you have to do it and you can do it. मार्केट में है वो एडवांस लेवल की प्रैक्टिस ही करवाते हैं या बेसिक से होते हैं? संभवी, आई थिंक यू शुड connect to the counseling team to understand this, but yes, as far as textbook is concerned, their mock test is the level of mock test is good.
How to improve writing skills? I have already explained it. थैंक यू जीवन. आई विश यू कि आपको अब एक और साल मेरी शक्ल ना देखना पड़े. आई विश कि आप इसी साल जीवन इज सेइंग दैट ही हैज बीन फॉलोइंग मी फॉर 2 years and I am his द्रोणाचार्य. So I am not the द्रोणाचार्य. I am just doing my job, my dear friend. And I just hope कि आपको अगला साल मेरा चेहरा ना देखना पड़े और आप आरबीआई के किसी चेयर पे बैठे हो. I wasn't eligible to give SBI P exam since my 21 years of age. It will be complete June this year. Will I be? Soumya, that depends on the cutoff date of RBI notification. So you need to wait for the notification. उसमें जो भी कट ऑफ डेट आएगी. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप जून में कंप्लीट कर रहे हो तो तब तक आई बिलीव यू मस्ट बी एलिजिबल, बट आई कैनॉट गारंटी दैट. How can I structure? You need to identify the keywords. Aryan, you need to identify the keywords from the question. You just have to write what and why, what or why in the introduction, then body, and then conclusion. Okay, this is the basic thing through which you can structure your descriptive answer. How to cover reports and what sources we can follow? You can rely on my PIB session and Madhav Sir's finance current affairs sessions and your general current affairs magazine. That would be good to go. Nilmani Mahato. How to filter all the important RBI notifications? That's what Madhav Sir is doing for you. You don't have to do it. फेज 2 का इंट्रो कंप्लीट कर चुका हूं. इज इट पॉसिबल टू कंप्लीट फेज 1 सिलेबस विद इन 2 months? Aryan, yes. Again, that depends on your potential. See, to everyone who is asking that is it possible to do it or not, so that depends on your potential, right? As I already said that let's say there is a PDF. I am taking 3 days to complete it, and you can complete it in 1 day. So you are pretty much faster than me, right? So you can do it, I can't do it, right? So that depends on your potential. But yeah, 2 months are more than enough, are in for phase 1. Yes, शेजल, वेरी गुड क्वेश्चन. क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं. यस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग जो पोर्शन है उसको लास्ट में रखा करो, बिकॉज दैट इज समथिंग. क्रिटिकल रीजनिंग जो है ना वो ओपिनियन बेस्ड है. मेरा ओपिनियन कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, एग्जामिनर का कुछ और हो सकता है. अब आपका ओपिनियन एग्जामिनर, क्योंकि उसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, कुछ है नहीं, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर करना होता है. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्रिटिकल रीजनिंग को अवॉइड करो, बाकी एरिया को टारगेट करो. वैसे भी यू कांट डू ऑल द 60 क्वेश्चंस. ठीक है. ऑनेस्टली बताऊं, नोटिफिकेशन के कितने चांसेस है? देखो जैन साहब, मैं आपको बताता हूँ कि नोटिफिकेशन के जो चांसेस हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ आएगा ही आएगा. ठीक है. बस ये है कि ग्रेड ए आए या ग्रेड बी आए, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. नोटिफिकेशन तो आना ही है. ठीक है. आरबीआई रिक्रूट तो करेगा ही ना. काउंसलिंग टीम से कहाँ पे कनेक्ट करना है? आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अपनी क्वेरी डाल दीजिए, आपको कनेक्ट आ जाएगा. हाउ कैन आई इंप्रूव वोकैबुलरी? रीड द न्यूज पेपर्स. रीडिंग रीडिंग रीडिंग. इंग्लिश बहुत वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करो ना भाई. अब देखो, मैं अगर ये बोलूं कि यार मैं अ, एक बार मैंने सोच लिया कि चलो मेरे को आरबीआई की प्रिपरेशन करनी है. ठीक है. अब मैं ये कह रहा हूँ यार मेरी इंग्लिश बहुत वीक है. अरे तो उसको स्ट्रॉन्ग करो. अब कैसे करना है स्ट्रॉन्ग, वो आपको समझना पड़ेगा. इंग्लिश की जो बेसिक ग्रामर की किताबें होती हैं वो खरीद के लाओ, उनमें से ग्रामर सही करो, राइट? न्यूज़पेपर पढ़ो, रीडिंग करो, वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करो. क्यों नहीं होगी? डूअर्स, माय डियर फ्रेंड, डूअर्स. आई हर्ड दैट केस स्टडी क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग टू आस्क इन एग्जाम. वे एक तो इंग्लिश सही करो अपनी भाई आप लोग. ठीक है. केस स्टडी बेस का मतलब है कि मान लो कि लीडरशिप का कोई टॉपिक है, तो उसमें कोई केस स्टडी दे दी आपको और उसमें ये पूछ लिया कि बताओ ये किस टाइप की लीडरशिप क्वालिटी है. ठीक है. फ्रॉम वेयर टू डू ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स. अरे बगल में छोरा, शहर में टिंडोरा भाई. PIB current affairs by Mr. Manish Mishra every Monday and Wednesday and Friday at 5 p.m. and finance current affairs by Mr. Madhav Arora every Tuesday, Thursday and Saturday 5:15 p.m. only on Testbook YouTube channel. कहीं जाने की जरूरत नहीं है. International bodies reports, yes, I will try to cover them, don't worry. How to deal with the anxiety? I score well in mocks but still I am not feeling like that I am prepared for the examination. देखो दिवांशी, एक बेसिक लेवल की एंजाइटी हर एस्पिरेंट में होती है. इनफैक्ट मेरे अंदर भी होती है जब आप पेपर देने जा रहे होते हो.
कि मेरा पढ़ाया हुआ आएगा कि नहीं आएगा. So एक basic level की anxiety होना is not bad, but yes, that anxiety should not overpower your preparation and it should not hamper your preparation actually. So I believe अगर आपको थोड़ी बहुत anxiety हो भी रही है तो it's perfectly fine. Of course आपका career दाव पे लगा है ना भाई. As a beginner, totally confused from where to start and what to do. I have created a 6 months timetable video, Mira. Please go and watch that video. You'll have much clarity. PFRDA ग्रेड ए की नोटिफिकेशन मुझे नहीं पता है मुकेश जी. आई एम रियली सॉरी. अफेयर्स क्लाउड मैगजीन में आपको पूरा ही पढ़ना लगभग. भाई आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द पीडीएफ्स ऑन टेलीग्राम चैनल ब्रो. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं पीडीएफ दे रहा हूँ. टेलीग्राम चैनल का नाम है मनीष सर डैश RBI SEBI NABARD. I have been providing all the PDFs for the last 6 years. ठीक है, एक भी पीडीएफ नहीं छूटी है. Yes, PIB and current affairs by Testbook are sufficient, of course. Do you think the panel has their mains marks already with them during interview? There are speculation going around about them after the scorecard came out for mains exam. Yes, there are speculations going on, but उससे हमें क्या फर्क पड़ता है मयंक? उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अगर उनके पास मार्क्स है या नहीं है, वी कांट डू एनीथिंग. देखो ये सब चीजें जो होती है ना, ये आपको एंजस करने के लिए बताई जाती हैं. इस तरीके की बातों में मत पड़ा करो. हाँ उनके पास मार्क्स होते हैं, जानबूझ के मार्क्स काटते हैं. आपसे उनके कोई दुश्मन थोड़ी है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उनके पास मार्क्स हैं या नहीं है. अच्छा चलो मैं आपको बोल देता हूँ कि हाँ उनके पास आपके मार्क्स होते हैं, तो उससे क्या होगा ये बताओ. बताओ, टेल मी. कुछ नहीं होगा. या अगर उनके पास मार्क्स नहीं भी है तो भी क्या होगा? कुछ नहीं होगा. ठीक है जी. सो डोंट एंगेज योरसेल्फ इन सच टॉक्स. जस्ट इन सबको हटाओ. ये आपने देखा होगा, ये सब बातें मैं कभी नहीं करता कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ये होगा वो होगा. अरे ठीक है, उनके पास मार्क्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है. उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हमारी प्रिपरेशन वही करनी पड़ेगी हम जो वैसे करते आए. ओके आर्यन, आई थिंक यू शुड गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर्स फर्स्ट, क्योंकि आपको बहुत कम नॉलेज है अभी एग्जामिनेशन की. सो प्लीज गो थ्रू द पास्ट ईयर पेपर एंड ओनली देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, ऐसे नहीं करो प्लीज. अपने करियर के साथ मत खेलो. डूअर्स वो जो है वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा. आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आंसर राइटिंग में मदद मिलेगी. ठीक है, चलिए guys, that's it for today's session. I will see you after 14 days once again in another Ask Me Anything session where you will be able to ask me anything. I hope these sessions are helping you and please do share it with your friends, family, neighbor. दोस्त यार बंधु सबके साथ शेयर कर दिया करो so that they can also join and ask question. ठीक है. No, the interview panel do not judge you based on your graduation year and current job status. Not at all. Don't worry. ये सब आखिरी stages की बात है शालिनी. We'll discuss all of these things. ठीक है. चलिए guys, thank you very much. Goodbye, take care and God bless.